Hello students, very good morning to all. In our last class in reproductive health, we have already discussed about various birth control method, in which we have already thoroughly discussed about natural method, your barrier method, chemical method, oral contraceptive pills, emergency contraceptive pills, IUCD, intrauterine contraceptive device or intrauterine device, injectable hormone, Norplant. Another is your surgical method, which is near to be permanent method, also called sterilization, that is male sterilization vasectomy, female sterilization tubectomy, and lastly MTP. Today we will discuss about infertility and assisted reproductive technology. So first let's see what is infertility. Infertility. When a couple announced as infertile couple, what is infertility? बंध्यात्व कौन एवं आर आमे बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक नॉलेज पाइले कोठो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रो पिला माने आम मानकर गोटे रिप्रोडक्शन टा गोटे कंबाइंड फंक्शन बाइपेरेंटल रिप्रोडक्शन. We reproduces sexually, and in that sexual mode of reproduction, male has a certain role, female also has certain other role, not the same. That we have already explained, we have already discussed. That means definitely there is some defect in that reproductive system. Infertility is a disease. तामाने definitely there is some disorder in that reproductive system, either in male reproductive system or in female reproductive system. So when we announced that couple as infertile couple, or what is the true definition of infertility? So infertility is defined as 1 to 2 years of 1 to 2 years of a regular unprotected sex. 1 to 2 years of a regular unprotected sex without any result. तब कहबा इनफर्टिलिटी माने मोस्टली हमें 1 ईयर 12 मंथ तक नहीं चे 12 months of regular intercourse, regular sex, unprotected sex
कौन सी प्रकार प्रिवेंशन आम नहीं कौन सी प्रकार प्रोटेक्शन नहीं अनप्रोटेक्टेड सेक्स बट विदाउट एनी result that is called infertility and infertility is also called a relative sterility it is best defined relative sterility there is two terms one is infertile one is sterile so is these two terms they are synonymous no at all sterile not able to reproduce but infertile with certain with undergoing certain treatment can reproduce so infertility is relative sterility प्रायतः बांझ पिला माने इनफर्टिलिटी आउ स्टेरिलिटी इनफर्टाइल आउ स्टेराइल भितर फरक होची आमे जदि ओडिया रे ताको कहिबा सी बांझ सी बंध्यात्व सी प्रायतः बांझ এই দুইটা শব্দ যাহা ইনফার্টাইল স্টেরাইল और इनफर्टिलिटी स्टेरिलिटी सेया दैट मीन्स इनफर्टिलिटी इज नियरली स्टेराइल रिलेटिव स्टेरिलिटी रेगुलर इंटरकोर्स कहीं कहले पिला माने रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्स कहीं कहले गोटे छोट एक्सप्लेनेशन रु बुझी पारिबो सपोज गोटे कपल 10 to 15 years मैरिज है 15 वर्ष है बाहा से पाखे ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैलकुलेशन नॉलेज नहीं से माने अलग सेक्टर रो लोक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रो कैलकुलेशन जोटा आम जस्ट पढ़िले पीरियडिक एब्सिस्टेंस कैलकुलेशन तांको पाखरे नाही एवं 15 वर्ष है से माने मिसुचंती बट कोइंसिडेंटली कौन होइची ए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रो जो फर्टिलिटी पीरियड जोटा रहुची 13th 14th 15th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल माने दुर्योगवशतः 15 वर्ष है एमिति तांको मानकर जो लाइफस्टाइल किंबा तांकर स्ट्रेस हो पारे लाइफस्टाइल हो पारे सिचुएशन बेस हो पारे सपोज फर्टिलिटी पीरियड रे से माने भी अच्छंती बट मेल रो स्ट्रेस अलग आजिकल तो बहुत स्ट्रेस पिला माने हमें नौचे तेणु तार स्ट्रेस अच्छी से माने मिसी ना ए पीरियडटा सो तांको इनफर्टाइल कपल कहिबा कि नो नॉट एट ऑल गोटे कपल 15 वर्ष है बाहा 15 वर्ष है तांकर मैरिज है सब बेले से माने मिसुचंती सब बेले नॉट दैट 30 दिन बट सब बेले ये आज यूजुअल मिसुचंती बट दुर्योगवशतः केबे भी से माने तांकर मेंस्ट्रुअल साइकिल रो फर्टिलिटी पीरियड रे मिसी नाहांती कोई पार से माने कोइंसिडेंट मिसी नाहांती किंबा से माने सेईटा जे गोटे फर्टिलिटी पीरियड जानि भी नाहांती कौन से कारण भी मिसी नाहांती स्ट्रेस हो पारे तांकर लाइफस्टाइल हो पारे तांकर सिचुएशन हो पारे मिसी नाहांती बट तांकु ता बोली इनफर्टाइल कहिबा कि नो नॉट एट ऑल कहीं ना जो पीरियड रे से माने फर्टाइल हवा कथा से माने मिसिलेनी तेणु इनफर्टाइल तेणु इनफर्टिलिटी पिला माने
regular unprotected sex without any result, that is called infertility. And infertility is better defines that relative sterility. Sterility and infertility is not two synonymous terms. Sterility, unable to reproduce, but infertility with undergoing certain modification, with undergoing certain treatment, can reproduce. That is infertility. Okay? And because pilamane, it is a combined function. Because it is a combined function, both are responsible. Both are responsible. Both has a defect. And equally गोटे इनफर्टाइल कपल माने से दी जनकर रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी. मेल जेतिकी परिमाण रे दायी, फीमेल सेतिकी परिमाण रे दायी. बट आमर जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, and because directly we know female reproduces, entire blame given to female. जदियो दी जन जाक इक्वाली रेस्पॉन्सिबल, टोटल ब्लेम टा नौ पिला माने के फीमेल. सो बट देयर इज मेल इनफर्टिलिटी, देयर इज ऑल्सो फीमेल इनफर्टिलिटी. सो when or what is when the male is fertile? When the male is fertile, when one male ejaculates 2.5 ml to 3 ml of semen with fluidity, adequate numbers of sperm, that is 200 to 300 millions, that is 200 to 300 millions. Fructose content and motile sperm, and ejaculate high up in the vagina, high up in the cervix, high up in the cervix. कौन पिला माने लिखिले? द कैरेक्टर ऑफ फर्टाइल मेल, कैरेक्टर ऑफ फर्टाइल मेल. ओके, character of fertile male. Okay, गोटे मेल टे केते बेले फर्टाइल? इजाकुलेट to this much of this amount of 2 to 3 ml of semen is ejaculated in a single ejaculation, and that ejaculate must have fluidity and must contain the adequate number of sperm, that is 200 to 300 millions of sperm, though a single sperm is capable enough to fuse the ovum. गोटे तम मन रे पिला माने प्रश्न आसुथिबो, though a single sperm is capable enough to fuse the ovum
why then this huge amount of sperm is needed? Obviously ये गोटे क्वेश्चन कि गोटे तो स्पर्म आमे जानिचे गोटे ओभम को गोटे स्पर्म फ्यूज करिवो ताले एते परिमाणर स्पर्म आवश्यकता कौन जणे पचारिवो इवन एई अमाउंट रो स्पर्म रु तमरो जदि कमिला यू कैनॉट बी ए फादर कहीं आमे कहिचे मोटिलिटी काउंटेबिलिटी वायबिलिटी इज नीडेड motility countability and viability you must have a viable sperm you must have adequate number of sperm that is this amount of sperm you must have a motile sperm not physically handicapped sperm not asthenospermia okay that condition is called pila mane asthenospermia. So you must have that amount of sperm you must have this volume of semen with fluidity with fructose content that provides energy motile and ejaculate high up in the cervix during the process of copulation then you are one fertile male. Then what are the causes of infertility? Causes of male infertility. What are the reasons? What are the causes for male infertility? What one male has to rectify? Number one, क्रिप्टोकोइडिज्म ऑलरेडी आम जानिचे क्रिप्टोकोइडिज्म पढ़ीचे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रे क्रिप्टोकोइडिज्म कौन टेस्टिस फेल्स टू डिसेंड डाउन इनटू द स्क्रोटम testis fails to descend down into the scrotum in some person testis yet present inside the abdominal cavity so that the optimum amount of temperature he cannot get and that is unsuitable medium for formation of sperm that is cryptocoidism. Second, blockage of a vas deferens blockage of vas deferens कहीं पिला माने सी एठू जीव ओभम रु ओभारी रु जते बेले बाहर की जीव सॉरी एपिडाइडाइमिस रु जते बेले स्पर्म टी जीव vas deferens it only conducts sperm if there is blockage then sperm movement is prevented inhibited so that is blockage of vas deferens. Hyperthermia that means high scrotal temperature it is due to varicose varicose vein ro one varicocele hydrocele filariasis and tight undergarment आमे माने जानिचे पिला माने an optimum temperature is required for formation and maturation of sperm and that optimum temperature is provided with that scrotum
and if that scrotum temperature enhances due to this reason, may be varicocele हो, may be hydrocele हो. hydrocele पिला माने varicose vein टी defect. hydrocele means scrotal chamber जो हमर अछि filled with fluid. filariasis one disease caused by eukarya bankruptcy and tight undergarment. जदि टाइट अंडरगारमेंट भी आम पिंधुवा ताहले आमर स्क्रोटाल टेम्परेचर बढ़िबो एंड दैट कैन नॉट प्रोवाइड यू दैट ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फॉर्मेशन एंड मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म. नेक्स्ट, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम. क्लिनेफेल्टर्स सिंड्रोम. क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम को आम पिला माने जेनेटिक डिजॉर्डर रे पढ़ीचे. ये गोटे जेनेटिक डिजॉर्डर 44+XXY जार क्रोमोजोम कन्स्टिट्यूएंट 44+XXY ये हूँ अनादर क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम. अनादर कॉज योर एजुस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, एजुस्पर्मिया, absence of sperm or oligospermia, absence of sperm or oligospermia, few sperm, asthenospermia, non-motile sperm. Okay, so all these required. All these are the causes of male infertility. Okay, so these are the causes of पिला माने मेल इनफर्टिलिटी. आमे आसंता क्लास रे पढ़िबा तार फीमेल इनफर्टिलिटी आउ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बाबदरे. आ सहित आउरी रहिबो तमर जोटा आमे कहिले जे काउंटेबिलिटी, वायबिलिटी and motility. Even glandular defect another cause. Glandular defect. Okay, so आसंता क्लास रे पिला माने पढ़िबा फीमेल इनफर्टिलिटी. आज पाई एतिकी थाउ. थैंक यू ऑल.